All right, we are live. Hello, good evening, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of logical reasoning today. So, we're starting a new concept, a new topic today. We've already looked at assumptions, we have already looked at inferences. Today's discussion is going to be about conclusions, which is also an important topic from CLAT's perspective. And let's see what exactly are conclusions about. How do we approach these questions? How do you do elimination? Let's dive right into it. But before we start, today is 5th of September. So, best wishes of Teachers' Day to all of you because I learn a lot of things from you guys. So, yeah, this is a mutual sort of a learning process where I learn from you. You guys probably learn from me. So, yeah, बेस्ट विशेस ऑफ टीचर्स डे टू यू गाइज एज वेल. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. Let's look at conclusions. Now, I hope you all remember what exactly are logical arguments from our previous discussions. But if you don't, let's just quickly take a recap. Now, a logical argument is one which has two components, two primary components. The first one is premise. The second one is conclusion. What is a premise? Premise is anything which is providing you information, any particular statement, any particular data, anything which gives you, information about something. That is your premise, data, right? Now, based on that premise, you can draw a particular conclusion. You can reach a certain conclusion. How do you reach the conclusion? The premise directly correlates to the conclusion. So for example, if we were to take a very basic example, which we take very often, is I study daily for CLAT exam. I study daily for the CLAT exam. Therefore, I have a good chance of getting an NLU, right? So this is a logical argument. Now here you can identify two components. The first part is I study every day for the CLAT exam. This is just information, right? This is just a statement. It has no conclusion in itself. But this leads us to the conclusion that मैं रोज पढ़ाई करता हूँ CLAT के लिए. Therefore, I will have a good chance of getting a national university or cracking CLAT, whatever. So the second part, this is our conclusion. What is a conclusion? We'll come to that now. I hope this is clear. What is a logical argument? There's another component, which is assumptions, which we have already discussed, which is the hidden or implied or implicit part, which links the premise to the conclusion, but that's not the point of discussion of today's session. So we'll just stick to what are conclusions. Now, conclusions are something which the author is trying to establish, right? Something which the author is trying to prove, something which the author is trying to convince you of that ऐसा होना चाहिए logically. That is simply what your conclusion is. Now, before we move ahead, let's address some common doubts. Can there be more than one conclusion? What do you guys think? In a logical argument, can there be more than one conclusion? Yes or no? Chat box में बताओ आप लोग. What do you guys think? Can we have more than one conclusions in a logical argument? Is that a yes? Is that a no? Is that a maybe? Okay. Interesting responses. Chalo. So the answer to that is absolutely yes. It is 100% possible to have more than one conclusions flowing from a particular premise in a particular logical argument. अगर हम पिछला वाला अपना example लें, I study every day for the CLAT exam, therefore I will get into a NLU, and I can say, and consequently I would have a good career trajectory. तो यहाँ पे दो conclusions आ गए. एक तो I'll get into an NLU और एक I'll have a good career path, है ना? So there can be more than one conclusions for a single particular premise or in a single logical argument. Usually आपको एक argument में एक ही देखने को मिलता है most of the times, but there is a possibility that you can see multiple conclusions. अच्छा, conclusions are a little bit different from inferences, ठीक है? Conclusions are things which we can say with certainty. There's a surety involved here. There's logical flow based on certain information, है ना? Inference में क्या होता है? Inference में we are making a deduction. Inference में we are speculating to a certain extent based on what we know. So it's a calculated guess, you could say. अनुमान जिसको हिंदी में कहते हैं. That's what your inference is. But conclusion is certain. Conclusion is final. Conclusion is
something concrete. Okay, it's not just made up or a guess. That is an inference. Conclusion is certain. Okay, now that you've established that, let's just quickly look at some pointers. So, what is the conclusion? What is the author trying to say, first of all? That means, what is the author's main point? What is the crux of the author's argument? What is he trying to establish? It may or may not be in the passage, the author's opinion, the author's conclusion, the author's main point. So you might have to apply your brains and think that author यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं. तो ये आपको कई बार खुद से निकालना होगा. कई बार हो सकता है पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कंक्लूजन पैराग्राफ में नहीं हो सकता, नो, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? ऑथर आपको मल्टीपल पैराग्राफ दे रहा है ना. लेट्स से दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने कुछ बातें बताई, लेट्स से जीडीपी के बारे में. फिर सेकंड पैराग्राफ में लेट्स से उसने कंपैरिजन बताया इंडिया की जीडीपी का. थर्ड पैराग्राफ में उसने बताया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं. एंड देन ही कंक्लूड्स दैट इंडिया को ऐसा ऐसा करना चाहिए. सो कंक्लूजन आपका आ गया पैसेज में. हो सकता है कंक्लूजन लास्ट में आए, हो सकता है कंक्लूजन यहीं पे स्टार्टिंग में आ जाए, हो सकता है कंक्लूजन बीच में कहीं आए, हो सकता है थ्रू आउट मल्टीपल कंक्लूजन्स हो पैसेज में. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल. ठीक है. सो डोंट पुट एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन योर हेड कि कंक्लूजन इस तरीके से मिलता है, या फर्स्ट पैराग्राफ से मिलता है, या लास्ट से मिलता है, या जो लिखा हुआ है पैसेज में वो कंक्लूजन नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. It may be in the passage, it may not be in the passage. You have to apply your logic and understand that ये information से author क्या बताना चाह रहा है. अगर जो वो बताना चाह रहा है उसने खुद से बता दिया, well and good, it's in the passage. अगर जो वो बताना चाह रहा है वो आपको understand करना है, आपको conclude करना है logically, and it's not in the passage. है ना. Both the things can be possible. अच्छा, कुछ इसके indicator words होते हैं conclusions को point out करने के. 99% of the times, usually these words are followed by certain conclusions. Words like consequently, words like therefore, thus, hence, henceforth. These can be a suggestion or an explanation or a refutation based on what the premise said. ठीक है. तो premise के basis पे कुछ suggestion दिया, premise के basis पे कुछ explanation दिया, जैसे हमने CLAT वाले example में दिया. premise के basis पे आपने कुछ refute किया है ना, कुछ आपने reject किया. That can also be a conclusion. So this is how you understand what a conclusion looks like. ठीक है जी. चलो, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हाउ डू यू एग्जैक्टली फाइंड अ कंक्लूजन. कंक्लूजन ढूंढा कैसे जाएगा? नाउ इट्स प्रीटी सिंपल, राइट? नाउ first of all, we understand that it's a belief or opinion which can be derived from a statement or premise. There can be one conclusion, there can be more than one conclusion. We established that. And the third thing and very important point is don't make assumptions. अच्छा, assumptions में क्या होता है? Question आपको कहता है that if we assume this to be true, या फिर strengthening and weakening में question आपको कहता है if this is considered true. Conclusion में ऐसा नहीं होता है. Conclusion में direct आपसे पूछता है कि what is the author trying to say, what is the author's main point, what is the author's conclusion, which of the following support the author's conclusion, which of the following supports the author's premise and serves as a conclusion. These are how variations of questions look like. And इसमें आप assumption नहीं लगा सकते भाई साहब. आपको जो information given है in the passage, in the paragraph, that is the only sample set of information which we are gonna use. अगर पैसेज में लिखा है कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है तो इंडिया एक डेवलप कंट्री है. अब आपको चाहे कुछ भी लगे. अगर पैसेज में लिखा है एप्पल जो है ब्लू कलर का होता है तो एप्पल ब्लू कलर का होता है. उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि जो भी कंक्लूजन बनाना है. ठीक है. सो जस्ट स्टिक टू द डेटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, गिवन इन द पैराग्राफ, एंड डोंट मेक एनी assumptions while solving questions of assumptions. This is a big pro tip you could say. ठीक है. आई होप समझ में आ गया आप लोगों को कंक्लूजन क्या होता है. बहुत सिंपल है. लाइक इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपलिस्टिक. सो या, दैट्स हाउ यू गो. यू आइडेंटिफाई द प्रेमिस एंड कंक्लूजन इन द आर्ग्यूमेंट. यू चेक द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन. लाइक ऑप्शंस आप चेक करोगे, देखोगे ये स्कोप ऑफ द क्वेश्चन में लाई कर रहा है कि नहीं. ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है बेसिकली. बियॉन्ड द स्कोप या आउट ऑफ स्कोप वाले को आप रिजेक्ट कर दोगे. जेनेरिक और वेग कंक्लूजन्स को आप रिजेक्ट कर दोगे. टू स्पेसिफिक कंक्लूजन्स should be what not even too specific, but बहुत ज्यादा नैरो भी ना हो, लेकिन आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको करेक्टली स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा हो कंक्लूजन, वो हमारा सही कंक्लूजन हो. इट टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट द थिंग which is being referred to in the premise. So it does not have to be too generic, too vague, does not have to be too narrow, does not have to be out of scope of the question. Like question कुछ बात कर रहा है, आपका ऑप्शन कुछ और ही डिफरेंट ही दुनिया में बात कर रहा है. So that is also a trap. One trap, two trap, three trap. यहाँ पे trap है narrow options. And the fourth trap is filtering out extreme options. Words like all, words like never,
वर्ड्स लाइक ऑलवेज, इस टाइप के वर्ड्स अगर कंक्लूजन में लिखें तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी इज लेस देन 2%. आई एम नॉट सेइंग 100% गलत होगा अगर एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, बट 98% ऑफ द टाइम्स दोज आर रॉन्ग ऑप्शंस. क्यों? बिकॉज ये जब आप एक्सट्रीम वर्ड्स लगा देते हो तो आपको कंक्लूजन बहुत स्ट्रांगली प्रूव करना पड़ता है. अब अगर हम अपना बेसिक एग्जांपल लें, आई स्टडी एवरी डे फॉर द क्लैट एग्जाम, देयरफॉर आई विल ऑलवेज क्रैक क्लैट एवरी ईयर. क्या ये कंक्लूजन हम ले सकते हैं? या फिर हम ले सकते हैं कि आई हैव अ गुड चांस ऑफ क्रैकिंग क्लैट, विच इज अ बेटर और स्ट्रॉन्गर और अ मोर वैलिड कंक्लूजन, दैट यू हैव अ बेटर चांस, और विल यू क्रैक क्लैट with let's say all India rank 1 every time because you study every day? That's a too extreme of a conclusion, right? या फिर उल्टा इसका कर लो आप, I study every day, I study 12 hours a day for CLAT exam and yet I would never be able to crack the CLAT exam. तो यहाँ पे never आ गया, दूसरा extreme हो गया है ना, ये भी valid conclusion नहीं है. So this is how you sort of eliminate options and reach the right answer by taking calculated risks कह सकते हो, guesses कह सकते हो, but this is more like informed decision making, right? चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स सी इफ यू guys can apply the logic which you understood the concept into some questions. We'll solve 4-5 questions today, and in the next session which we have on logical reasoning, we'll practice some more questions to improve your understanding of it. Okay, so this is the first question. It's on your screen. दो conclusions आपको दिए हैं based on a particular statement. You have to tell which of the option is correct. You will choose A if only the first conclusion is right. You'll choose B if only second is right. C if both are right. D if none of them are right. And E if either one or two. एक टाइम पे कोई सा एक. तो चलो, you guys have 30 seconds to solve this. It's a short and sweet question. ओके, डन. सॉल्व करें साथ में. चलो, आज साथ में करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है? अगले सेशन से आप लोग खुद से सॉल्व करना, एंड देन मैं बताऊंगा सही किया कि नहीं किया. आज आई विल हेल्प यू आउट विद द क्वेश्चंस. Alright, the statement is in an ODI match, one day international cricket match played between India and Pakistan, the total runs made by the Indian team were 400. ठीक है, 400 रन बना दिए इंडिया ने. ये हमारे पास प्रेमिस आ गया. 320 runs out of the 400 runs were made by pacers. Pacers मतलब होता है फास्ट bowlers. अब अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है क्रिकेट की तो आपको पता है कि बॉलर्स जो है बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन जो है बैटिंग करते हैं, या बैटर्स जो है बैटिंग करते हैं. पेसर्स भी बैटिंग कर लेते हैं बट उतने अच्छी बैटिंग नहीं करते ऑब्वियसली, है ना, बेसिक क्रिकेट नॉलेज. अब यहाँ पे लिखा है कि 320 रन आउट ऑफ 400 वर मेड बाय पेसर्स या फास्ट बॉलर्स, जो कि टेल एंडर बैट्समैन होते हैं, नॉट स्किल्ड बैट्समैन. अब इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ पेसर्स. तो अगर टीम में 10 लोग हैं तो उसमें से 8 पेसर्स हैं. कैन वी कंक्लूड दैट जस्ट बिकॉज 80% ऑफ द रन्स वर मेड बाय पेसर्स, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आई थिंक 80% ही आएगा ना, 4-5, यस. सो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 80% जो है टीम में पेसर्स हैं, यानी 10 में से 8 खिलाड़ी बॉलर्स हैं? कैन वी से दैट? No, we can't say that, right? That's not a valid conclusion. So this is wrong. The second conclusion is the opening batsmen were pacers. Do we have any information which tells us that the first two batsmen, the opening batsmen, were pacers or bowlers? Can we conclude that just on the base of this particular statement? No, we cannot. Both the conclusions are wrong, which means option number D is the right answer. Neither conclusion 1 nor 2 is true. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो. लेट्स सॉल्व दिस वन. guys have 1 minute to solve it.
आंसर्स जल्दी जल्दी. Okay, chalo, let's solve this together. The statement says only good artists are invited to the exhibition. The second statement is no one without good art knowledge is a good artist. तो जो सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट हैं उन्हीं को एग्जीबिशन में बुलाया गया है, और कोई भी जिसके पास अच्छा आर्ट नॉलेज नहीं है वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है. नो वन विदाउट गुड आर्ट नॉलेज इज अ गुड आर्टिस्ट. ठीक है, कंक्लूजन्स देखते हैं. पहला कंक्लूजन है ऑल इनवाइटेड आर्टिस्ट इन द कंपटीशन नो आर्ट वेल. ये कंपटीशन यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज एग्जीबिशन. ठीक है, तो उसको वैसे मत कंफ्यूज होना कि ऊपर तो एग्जीबिशन है यहाँ पे कंपटीशन है. जस्ट अज्यूम दिस इज एग्जीबिशन ओनली. ओके, चलो बताओ, इज दिस अ वैलिड कंक्लूजन? यस और नो? यस इट इज. देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था ऑल वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, वो 98% केसेस में रॉन्ग होते हैं. बट मैंने ये भी बोला था कि 2% केसेस में वो सही होते हैं जब आपका स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट हैज द वर्ड ओनली, स्टेटमेंट हैज द वर्ड नो वन. दीज आर ऑल्सो एक्सट्रीम वर्ड्स, है ना. तो यू हैव टू मैच द डिग्री टू मोस्ट एक्सटेंट. अब यहाँ पे अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो आपका कंक्लूजन भी एक्सट्रीम होगा कि सिर्फ गुड आर्टिस्ट को बुलाया है और कोई भी जो अच्छी आर्ट नहीं करता वो गुड आर्टिस्ट नहीं है. तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे जो बुलाए हुए आर्टिस्ट हैं वो अच्छी आर्ट करते हैं, उनको आर्ट की नॉलेज है, उनको पता है आर्ट के बारे में? हम कंक्लूड कर सकते हैं 100% दिस इज करेक्ट. सेकंड कंक्लूजन, दोज आर्टिस्ट हु डू नॉट हैव गुड आर्ट नॉलेज आर नॉट इनवाइटेड टू द एग्जीबिशन. एक ही बात है ना. अच्छे वालों को बुलाया है या जिनके पास अच्छी नॉलेज नहीं है उनको नहीं बुलाया, बात सेम ही है. कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, एक ही बात है ना. सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड कंक्लूजन. That means option number C, both conclusions 1 and 2 are true. I hope this gave you a little bit of understanding on how do you approach questions, how do you solve questions or conclusions. Now let's look at actual paragraph based questions. ये तो बहुत basic simple questions थे just for conceptual clarity. चलो एक और करते हैं छोटा सा, then we'll do paragraph based questions. एक last और करते हैं छोटा सा, ये interesting है ये वाला. Read the question carefully. This is the pro tip for this particular question. Read the question thrice. Are you done, folks? Okay, chalo, let's solve this. The statement is abolish taxes and real taxpayers would find that their disposable incomes have increased. Abolish taxes and public employees would find that their incomes have disappeared. तो देखो दो कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है लोगों को, एक है रियल टैक्स पेयर्स और एक है पब्लिक एम्प्लॉइज. ठीक है, टैक्स सबको पता है कि लाइक यू अर्न अ सर्टेन इनकम, गवर्नमेंट टेक्स अ सर्टेन पोर्शन अवे एज टैक्स एंड द रिमेनिंग इज योर डिस्पोजेबल इनकम जो आप यूज कर सकते हैं. तो कह रहे हैं कि अबॉलिश कर दो टैक्स, अगर हटा दो टैक्स तो जो रियल टैक्स पेयर्स हैं, जो असली टैक्स पेयर्स हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, है ना. पहले मान लो अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं और आपका 20% टैक्स है तो उनके पास 80 रुपए बचे, और ये अगर टैक्स हटा दिया 20 रुपए तो उनके पास फिर से 100 रुपए बच गए, है ना. That is their disposable income is now increased from 80 to 100. That is what it means. Real taxpayers की यहाँ पे बात हो रही है. The second statement is abolish taxes and public employees would find that their incomes have disappeared. तो public employees जो होते हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सैलरी.
एंड गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से। अब इतना आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयज वुड फाइंड दैट देयर इनकम्स हैव डिसअपीयर्ड। अब अगर टैक्स अबॉलिश हो गए, गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं ले रही है, तो गवर्नमेंट इनकम कैसे देगी पब्लिक एम्प्लॉयज को? कहाँ से देगी, है ना? सो उनकी इनकम जो है डिसअपियर हो जाएगी। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल कंक्लूजन दैट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन इन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव। इन दोनों अबव स्टेटमेंट्स को यूज करके हम कौन सा लॉजिकल कंक्लूजन यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन बोथ दी स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। देखते हैं। पब्लिक ऑफिसेस शुड बी अबॉलिश्ड सो दैट डिस्पोजेबल इनकम्स विल राइज। तो ये कंक्लूजन नहीं है, दिस मोर ऑफ अ, आप कह सकते हो, सजेशन। और ये क्या कह रहा है? पब्लिक ऑफिस ही बंद कर देने चाहिए ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। अरे, पब्लिक ऑफिस की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, पब्लिक एम्प्लॉयज की और टैक्स पेयर्स की बात हो रही है। दिस इज इररिलेवेंट एंड आउट ऑफ स्कोप एज वेल, कैन रिजेक्ट दिस। द ओनली, अगेन एक्सट्रीम वर्ड्स यहाँ पे आपको ट्रिगर होना चाहिए, ओनली रियल टैक्स पेयर्स आर दोज हु वुड हैव मोर टू स्पेंड इफ दे डिड नॉट पे टैक्सेस। क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी तो नहीं। दैट ओनली रियल टैक्स पेयर्स आर दोज हु हैव more to spend if they did not pay taxes. There might be other categories of people. We cannot really make an extreme suggestion like this. And moreover, ये जो है सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज कर रहा है टू ड्राइव द कंक्लूजन, बट हमें वो कंक्लूजन चाहिए जो दोनों को यूज करे, बोथ द स्टेटमेंट्स अबाउट, टू ड्रॉ द लॉजिकल कंक्लूजन। तो उस वजह से भी ये गलत हो गया। सी सेइंग पब्लिक एम्प्लॉयज आर नॉट रियल टैक्स पेयर्स, ये सिंपल हमारा वैलिड कंक्लूजन हो गया। भाई वो कह रहे हैं रियल टैक्स पेयर्स की इनकम बढ़ जाएगी, पब्लिक एम्प्लॉयज की जो है गायब हो जाएगी। तो इससे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि पब्लिक एम्प्लॉयज रियल टैक्स पेयर्स नहीं है, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये कंक्लूजन हमें दोनों स्टेटमेंट से मिल सकता है। सो या दिस इज अ वैलिड कंक्लूजन। एंड ही सेइंग पब्लिक एम्प्लॉयज इनकम शुड नॉट बी टैक्स सिंस दे कम फ्रॉम टैक्सेस। हमें क्या मतलब पब्लिक एम्प्लॉय की इनकम पे टैक्स लगे या ना लगे? हाउ इज दैट अ वैलिड कंक्लूजन फॉर अस? दैट्स नॉट रिलेटेड टू आवर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड once again this again depends on just the second statement। यहाँ पे रियल टैक्स पेयर्स पे डिपेंड ही नहीं करता ये स्टेटमेंट, अगर हम एक बार को सोचे भी ये ट्रू है तो दिस डज नॉट कम फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स अबव, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, so this is wrong, this is wrong, this is wrong. The right option is option number C. चलो अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Let's try this question. It's a paragraph. You have to tell what can be concluded from the passage. Are you guys done? Last 10 seconds. Chalo, let's solve this. Let's read the passage. Actor Christopher Reeve, who can breathe on his own for 15-minute stretches after experimental surgery to implant electrodes that stimulate the muscles in his diaphragm, told reporters that he had a remarkable experience. Breathing through his nose instead of through the hole in his throat required by his ventilator, Mr. Reeve was able to identify various smells: an orange, a chocolate chip cookie, a mint, and coffee for the first time in 8 years since a horseback riding accident left him paralyzed from the neck down. I actually woke up and smelled coffee, he told a news conference in University Hospitals of Cleveland, where the operation was performed on Feb 28. अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस पैसेज से हम विद सर्टेनिटी? ओके,
Paralyzed persons lose their sense of odor for some items like coffee. Can we conclude that? अब देखो यहाँ पे पैरालाइज्ड पर्सन्स लिख दिया है इसने, तो बहुत ज्यादा ये जेनेरिक और ब्रॉड हो गया है। ठीक है, अगर किसी के मान लो सिर्फ हाथ में पैरालिसिस हुआ है, जस्ट देयर हैंड इज पैरालाइज्ड, विल दे लूज देयर सेंस ऑफ ऑर्डर? नो। सो वी कैन नॉट जनरलाइज इट फॉर ऑल पैरालाइज्ड पीपल, देयरफॉर रॉन्ग। Smelling coffee is nothing short of a miracle for Reeve. Now, again, this we don't know. We don't know if this is a miracle or not. He was able to identify smells first time after 8 years. But how do we know this is a miracle? It could be possible that he did not get his operation done for a long time, for 8 years. It could be that he did not have money to get the operation done. It could be that this is just a standard procedure, but he was scared to get this operation done because this was not tested. This was an experimental surgery. So can't really say that smelling coffee is nothing short of a miracle for Reeve. So no, not convincing as a conclusion. Reeve's experience highlights the power of human will against medical odds. Again, हमें नहीं पता medical odds क्या थे, कितना human will Reeve ने show किया, क्या उसका struggle था. All of that is not told to us at all. कि उसने बहुत struggle किया, उसने बहुत will power दिखाई, etc. etc. ऐसे कुछ हमारे पास hints नहीं है, so we cannot conclude. Therefore, the right answer would be none of the above. Option number D. ठीक है, चलो एक last question और करेंगे before we call this a day. And the next class we'll practice more questions. Let's do this. Okay, chalo, let's solve this. Unlike the Romans or British, Americans are simultaneously the supposed guarantors of a system of international law and doctrine. It was an American initiative that every member nations of UN was obliged to subscribe to the UDHR. Innumerable treaties and instruments descending and ramifying from this are still binding legally and morally. Thus, for the moment, the word unilateralism is doing idiomatic duty for the word imperialism. Imperialism मतलब एक country का dominance, control, and unilateralism मतलब एक ही country का opinion लेना. So imperialism is a stronger word. आप कह सकते हो unilateralism when imposed on other countries can be called imperialism. तो कह रहे हैं कि जो unilateralism है वो एक तरीके से imperialism बन गया है, signifying a hyper power or ultra power that wants to be exempted from the rules because it wrote most of them. तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमेरिका इज द सोल ऑथर ऑफ यूएन कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात तो हमें ये नहीं पता यूएन कॉन्स्टिट्यूशन है भी या नहीं. कांट कंक्लूड दिस. अमेरिका इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मॉरल बीकन ऑफ यूएन. क्या ऐसा कहीं पे लिखा है कि अमेरिका इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ मॉरल बीकन या मोरालिटी बताता है अमेरिका यूएन की, इट्स द अथॉरिटी ऑन हाउ यूएन's morals would work? ऐसा कुछ नहीं है. Can't really conclude this. A little vague. C says UN is a convenient tool for America to establish its dominance. And D says cost of America as a global watchdog is subtle immunity for America. Immunity मतलब वो बच जाता है बाकी सारी चीज़ों से, बाकी सारे रूल्स से, and that is the cost of being the global watchdog. यानी कि पूरी दुनिया पे नजर रखना, पूरी दुनिया को ट्रीटीज वगैरह साइन करवाना. और ये कह रहा है UN is a convenient tool for America to establish its dominance. Now both of them seem fairly correct. Now your task is to understand कि पैसेज जो है एग्जैक्टली आपको बताना क्या चाह रहा है. पैसेज ये बताना चाह रहा है कि यूएस जो है अपनी पावर की वजह से यूएन की ट्रीटीज वगैरह यूज करके, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके खुद बच जाता है उन रूल से. इट वांट्स टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स बिकॉज इट रोट मोस्ट ऑफ देम. तो खुद बचने की बात ऑप्शन नंबर डी में हो रही है या ऑप्शन नंबर सी में हो रही है? सी में सिर्फ डोमिनेंस की बात हो रही है, विच इज ट्रू, विच इज नॉट रॉन्ग.
पर डी में बात हो रही है डोमिनेंस की भी, बाय बीइंग अ ग्लोबल वॉचडॉग, एंड बचने की भी, सटल इम्यूनिटी. So D is a better option as compared to C, and therefore we go with option number D as the right answer. And that sums up our discussion for today's session. I hope you guys now understand how to approach questions of conclusions. Do practice them on your own till we meet in the next class next week. And yeah, that's all for this particular session. Take care. I'll see you all in the Hindu analysis today at 8. Tada. Bye bye. Signing off.